Everyone, and welcome back to my channel. My name is Renu Verma and I'm your facilitator and your friend. So I hope that all the kids they are doing good, and I hope that you are practicing everything. In every video I always stress on practicing because learning and speaking English is something like that. जितना आप practice करोगे उतना ज़्यादा आपको आएगा, right? बिकॉज स्पीकिंग स्किल्स सिर्फ आपकी प्रैक्टिस से आएगा. सो मदर्स, आप अपने बच्चे को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है उतने ज़्यादा प्रैक्टिस कराइए. एंड फोर्स मत कीजिए डे टू डे एक्टिविटी में. जब भी वो कहीं when they are going outside, when they are sitting, so keep on asking the properties, keep on telling them to describe any random person. Okay, so that way you can do the practice. Okay, all right. And I always says that learning should be step by step, right? So in the previous videos we have learned how to describe any object with the help of properties. And in the last video I told people that they are facing problem that उनका बच्चा learn तो कर लेता है पर याद नहीं रहता है, right? And the basic reason behind that, because the children they are not listening carefully, right? So it's very important कि हम अपने बच्चों को active listener बनाए, तभी वो अच्छे से learn कर पाएगा, right? Okay, so without any wasting time, let's start the session. And so let's start. Okay, so I, as always, I focus on the 5E model. So kids, this is the picture. Mothers, please ask your children that who is in the picture. Please ask them who is in the picture and what they are doing. क्या कर रहे हैं वो? So I'm sure that they will answer you that there are two cute monsters in the picture, right? And can you see what is there? There's a music system, right? And can you see some music is coming out of from the system, right? So it means the monster they are listening the music, right? Hana? Yes, that's correct. And tell ask them what else you can see in the picture, right? So let's move ahead. So I would say please subscribe my channel, like and comment, and please share as much you can share, because I just want कि जो भी मैं information और knowledge जो मेरे पास है जो मैं share कर रही हूँ, I just want कि हर एक बच्चे को ये मिले, because that is going to contribute a little bit in their learning process. Okay, so please like and subscribe my channel. Thank you so much. And yes, the very important thing that in my next video, I think kids are very fond of phone, right? They just want to use the phone. They are talking to your parents, they are talking to their parents, friends, teachers, relative, right? I think that phone conversation is very important nowadays, right? So I think it is very important that small kids should learn some manners and etiquettes that they needs to follow while talking on phone, right? तो अभी नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू मेक ऑन टेलीफोनिक एटिकेट्स और मैनर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. आई वुड से प्लीज वॉच द अपकमिंग वीडियो. इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी जो बहुत ज़रूरी है बच्चे को लर्न करने के, जो बच्चा लर्न करे. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन. So yes, we were talking about that the monster is listening, right? So the topic is active listener, right? And how we can do that? Listening with whole body, right? And how we can do that? Generally we listen with the ears, but today we will learn how to listen with the whole body. Okay? So now, oh wow, who's there? There is a monster in the picture, right? Can you see that? And the monster is saying a monster can listen with the whole body. He's saying that I can listen with my whole body. What about you? The monster is asking to you. अब आप बताओ, आप अपनी बॉडी से लिसन कर सकते हो? Can you listen with your whole body? Is it possible? Let's think. Yes, it's possible. We can do that. And कैसे करेंगे वो? See, we have lots of body parts. We have eyes, we have ears, we have hands, we have mouth, we have heart, right? We have our whole body, we have feet, right? And we can use all the body parts to listen carefully. So first thing that we have to do is
that we have to listen with the help of ears. Okay, so how we can listen? We can hear with the ears. Okay, now mothers, please watch the complete video, because in the end, as always, I will share a small trick that can be add a more in the child's learning. Okay, so please stay tuned and complete video watch karo, and end में एक tip मिलेगी, please लेकर जाना. Okay, so listen with your ears. नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप सुन रहे हो तो आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी क्वाइट, राइट? सो इट मीन्स क्लोज योर माउथ. We will not speak. When we are listening, we will not speak at all, right? तो mothers please, आप बच्चे को ये हैबिट डालिए कि जब आप बोल रहे हैं तो बच्चा क्वाइट रहेगा, राइट? he or she will not speak anything, right? That is very important. Until unless उसके डे टू डे लाइफ में ये रूटीन नहीं बनेगा कि जब आप सुन रहे हो आपको बोलना नहीं है, that cannot come in studies, right? So tell your kids, the ma'am is speaking, you have to listen. It's not only about ma'am, it's about everybody. आपको अपने बच्चे को ये हैबिट डलवानी है कि जब आप सुन रहे हो, then you have to be quiet, zip up your mouth. Okay, now the next very important thing is that the eyes are at the speaker, right now speaker का meaning क्या होता है? जो बोल रहा होता है, that person is a speaker. So right now I am a speaker, मैं बोल रही हूँ, right? So you will not look here, you will not look there, you will look at your screen. Okay, because मैम आपकी screen पे है तो आपको screen पे ही देखना है. You will not look here and there, that is absolutely wrong. Okay, सो इन डे टू डे लाइफ ऑल्सो जब आप अपने बच्चे को कुछ बोल रहे हो, उनका फेस, उनकी आईज आपकी तरफ होनी चाहिए, right? Sometime it happens when we are telling something to the child is sitting like this, or the child is looking here and there. No. Okay, तो आपकी आईज स्पीकर की तरफ होनी चाहिए. अगर आपकी मम्मा आपको कुछ कह रही है तो आपको मम्मा को देखना है. ओके, alright, if papa is saying something, you have to look it to the papa. Speaker can be anybody, speaker can be mama, papa, teacher, anybody. जो भी आपके लिए कुछ बोल रहा है आपको उसके तरफ देखना है. That's it. Okay, now the next very important thing is brain. Can you see the monster, what he is doing? He is thinking with the help of brain, right? So if I am saying that, kids, do you know today we are going to do interesting thing? You want to know? So now you have to quiet, you have to look towards me, and you have to listen, and you also have to think in your mind, अच्छा मैम क्या कराने वाली है, right? Instead of speaking, आप अपने mind में सोचो. Okay, all right, keep on thinking. whatever the speaker is speaking, जो भी बातें स्पीकर बोल रहा है आपको अपने माइंड में सोचते रहना, अपने माइंड में स्टोर भी करनी है उन बातों को. ऑलराइट, यस. नाउ द नेक्स्ट वन इज हैंड्स. नाउ इफ द स्पीकर इज स्पीकिंग, राइट, sorry, if the speaker is speaking, you will not play with your hands. sometime ना आप अपने hands के साथ play कर रहे हो, आप अपनी skin को touch कर रहे हो, scratch कर रहे हो, no, that's absolutely wrong. hands का होनी चाहिए hands by your side, right? आप अपने hands को side पे रखोगे. if you are standing, then hands by your side. but अगर आप बैठे हो, if you are sitting, आप अपने hands को ऐसे join करोगे और अपने you will be keep it in your lap, राइट? लैप का मीनिंग है आप अपनी गोद में अपने हैंड्स को रख सकते हो, राइट? इफ यू वांट टू बी एक्टिव लिसनर, सी मॉन्स्टर तो एक्टिव लिसनर है, आपको बनना है ना एक्टिव लिसनर, तो हैंड्स कहाँ रखने हैं? हैंड्स को अपनी लैप में रखना है. अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में हो, खड़े हो, तो हैंड्स साइड पे रखने हैं. ओके, यस. नाउ द नेक्स्ट वन इज हार्ट. नाउ द हार्ट शुड बी केयरिंग, राइट? शेयरिंग इज केयरिंग, तो आपको शेयर भी करना है और केयर भी करना है, राइट? सो व्हेन इट्स कम टू केयरिंग मीन्स दैट व्हेन समबडी इज टेलिंग यू समथिंग, राइट, आपको बहुत ही केयरफुल सुनना है, राइट? और केयर भी करनी है उस चीज की. लाइक, कैन यू सी इन अ पिक्चर, देयर आर टू गर्ल्स, दे आर सिटिंग एंड द फर्स्ट गर्ल इज सेइंग, दिस इज माय फेवरेट बुक. द अदर गर्ल इज सेइंग, which part do you like the best? Now see,
सो देयर आर टू फ्रेंड्स, जब आप अपने फ्रेंड से बात करते हो तो आपके फ्रेंड्स भी आपकी बात सुनते हैं ना, तो ऐसा नहीं करना आपको कि आपका फ्रेंड कुछ कह रहा है और आपने उसकी बात सुनी नहीं. नो, यू हैव टू लिसन. एंड व्हाई वी आर सेइंग द हार्ट इज केयरिंग, बिकॉज जब आपका कोई फ्रेंड, आपके मम्मा पापा किस कोई बात आपको बता रहे हैं, इट मीन्स आपको सुनना भी है और आपको समझना भी है. ओके आप उस बात को समझने की कोशिश करो. ओके है ना. Like your friend is telling that today I don't have anything to eat, I didn't मैं अपना लंच नहीं लाया आज. तो आपको क्या करना है, शेयरिंग इज केयरिंग. उसने आपको बात बताई कि लंच नहीं लाए, तो आप क्या करोगे, इट्स ओके, यू कैन ईट विद मी, राइट, आप मेरे साथ लंच शेयर कर लो. तो आपने क्या किया, आपने उसकी बात को सुना और आपने केयर की. आपने समझा कि अगर वो लंच नहीं लाया तो उसको तो भूख लगी होगी, भूखा रह जाएगा, तो आपको केयर भी करनी है. ओके ऑलराइट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फीट्स ऑन द फ्लोर. लुक, ये देखो मॉन्स्टर के जो फीट्स हैं ये ऐसे ज्वाइन है, राइट. वो ऐसे ओपन करके नहीं स्टैंड हुआ, वो उसने अपने फीट्स को क्लोज किया है ज्वाइन करके, एंड ही हिज फीट्स इज ऑन द फ्लोर. फ्लोर के ऊपर रखना है आपको, ठीक है. इफ यू आर स्टैंडिंग, आपके दोनों फीट्स ऑन द फ्लोर होने चाहिए. सम टाइम बच्चे क्या करते हैं, अपने यू नो लेग्स को ऐसे स्विंग करते रहते हैं स्टैंडिंग पोजीशन में. दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. ओके अगर आपको एक्टिव स्पीकर बनना है तो आपको अपने हैंड, अपने फीट्स को ऐसे फ्लोर पे रखना है. ऑलराइट. ईयर्स ओपन होने चाहिए, आईज स्पीकर की तरफ. ओके ब्रेन इज थिंकिंग, ब्रेन को हमेशा एक्टिव रखना है, थिंकिंग करनी है. हैंड्स का होने चाहिए, हैंड्स बाय योर साइड, एंड हार्ट शुड बी caring. Heart should be caring. All right. And feet on the floor. Okay. Now the last one is body facing towards speaker. Right. Now I am a speaker. ठीक है. And it should not be like this कि आपका फेस तो मेरी तरफ है बट आपकी बाकी की बॉडी इस साइड पे. अब मेरी बॉडी इस साइड पे, मेरा फेस इस साइड. रॉन्ग. ओके दैट मीन आपकी बॉडी ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट या ऐसे स्टैंड अप होके आपकी बॉडी बिल्कुल स्पीकर की तरफ आनी चाहिए. ओके ऑलराइट. तो जिस साइड को स्पीकर है आपकी बॉडी भी वहां होनी चाहिए. लुक ही इज फॉर एग्जाम्पल ये मॉन्स्टर स्पीकर है एंड आई एम लिसनर. तो वेयर आई विल लुक, मैं मॉन्स्टर की तरफ देखूंगी, अपने हैंड्स ऐसे नीचे लैप पे रखूंगी, मेरे ईयर्स ओपन है, मेरी आईज मॉन्स्टर की तरफ है, हैंड्स मेरे लैप में है, ब्रेन मेरा थिंक कर रहा है और मेरा हार्ट केयरिंग है. दैट मीन मैं उसकी बात बहुत केयरफुली सुन रही हूँ और समझ रही हूँ. ओके ऑलराइट. सो दिस इज हाउ वी कैन बी अ एक्टिव लिसनर. और एक्टिव लिसनर का मीनिंग क्या है, जब आप एक्टिव लिसनर रहोगे तो आप एक्टिव लर्नर भी बनोगे, बिकॉज आपने सारी बातों को बहुत प्यार से सुना है अच्छे से, एंड आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, आप लर्न करोगे, राइट. सो किड्स, what we have learned today, listen with whole body. Okay yes. Now let us recapitulate all the things. क्या क्या learn किया है. The brain switched on thinking, right. तो आपको क्या करना है, ब्रेन को अभी सोचते रहना है, right. Ears are listening, ears क्या कर रहे हैं आपके, listen कर रहे हैं, right. The mouth is closed and quiet. The body is still and facing towards the speaker. That means body को क्या करना है, ऐसे ऐसे मूव नहीं करना है. नो, बॉडी स्टिल का मतलब क्या है, ऐसे स्टिल रखना है आपको एक जगह पे. ओके एंड फेस कहाँ होना चाहिए, स्पीकर की तरफ. ओके लाइक मेरी स्क्रीन क्या है, स्पीकर है, और मैं लिसनर हूं तो मैं अपनी स्क्रीन को ही देखूंगी. ओके ऑलराइट. द हार्ट इज केयरिंग अबाउट वॉट द स्पीकर इज सेइंग. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी स्पीकर बोल रहा है उसको बहुत ध्यान से सुनना है और केयरफुली, और केयर भी करनी है, राइट. आपका हार्ट उसके लिए केयरिंग होना चाहिए. ओके द फीट्स आर स्टिल एंड the feet are still on the floor. There is a mistake. तो feet कहाँ होने चाहिए, feet आपके join होने चाहिए और नीचे floor पे होने चाहिए. Okay hands are still of your body and by side, right. तो hands कहाँ होने चाहिए, hands आपके side पे होने चाहिए, right. And the last point is learning, and as I told you in the end, I am going to share one tip, and the tip is that it's not only about kids. You can do this thing that you can tell your child that we are going to play a game, right. And
you have to check on me and I'm going to check on you. It means that आप गेम खेल रहे हो, जो भी एक्टिव लिसनिंग करेगा उसको 1 पॉइंट मिलेगा, राइट, है ना? और आपको नोटिस करना है, एट 1 पॉइंट अगर आपका बच्चा एक्टिव लिसनर तो ये बोलेगा यू आर एक्टिव लिसनर, नाउ यू आर गेटिंग 1 पॉइंट, राइट? सो दैट वे इट विल बिकम लिटिल इंटरेस्टिंग, राइट? और यू कैन ऑल्सो से दैट ठीक है, अब नाउ आई विल बी अ एक्टिव लिसनर, नाउ यू विल बी अ एक्टिव लिसनर, and you are pretending, you are telling all the things that a active listener do, right? And sometime you can just make a mistake and ask your child, do you think ये मैंने ठीक किया है? The child will say, no मम्मा, आपने ये तो क्वाइट, आपने तो मिस कर दिया, आपको तो क्वाइट रहना था, right? So that way it will become very interesting, and I'm sure that kids will love, right? So it basically like that, child को ये नहीं feel होना चाहिए कि वो खुद ही सब पढ़ रहा है, right? You should teach the child in such way कि उसको लगे अच्छा मम्मा भी पढ़ रही है मेरे साथ, तो मम्मा भी कर रही है, right? So that way you can you know do things. That was just a tip, and I'm sure that this thing will definitely going to add some more in your child's learning. So that will be all for today. Thank you so much, and please share these videos with the kids, all right, so that they can also take advantage of these kind of videos. Thank you so much.